Now, next question is whether how much space can be tolerated between offer and acceptance. Offer made his offer. Now, how much time second party can take to accept the offer? तो कितना डिले किया जा सकता है, कितना स्पेस दिया जा सकता है ऑफर और एक्सेप्टेंस के दरमियान में. So according to Jamhur, a party can delay his acceptance till the end of majlis al-aqd. Till the majlis al-aqd, contracting parties can the second party can delay, can think about whether he will buy or not, what should be the response. He can respond to the offer till the end of session of the contract. Majlis al-aqd. We will define in the Majlis al-aqd in the next slides. Because sometimes the second party needs to think and consult with someone for his final decision. क्योंकि आप एक आदमी कह रहा है कि क्या आप ये मेरी चीज would you like to buy my commodity? He made it offer, but the second party need consult. वो मशवरा चाहता है, वो सोचना चाहता है कि उसे ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए. वो फोन करता है तो कहते हैं कि भी कितनी देर तक, तो कहते हैं जब तक वो सेशन एंड नहीं होता, जब तक वो सेशन बरकरार है, सेलर बैठा हुआ है, वो उसी जगह पे है और वहीं पे बैठे बैठे किसी को फोन करता है, तो कहते हैं जब तक वो सेशन एंड नहीं होता, उस सेशन के एंड होने तक वो उसको डिले कर सकता है. सो टिल द एंड ऑफ द सेशन acceptance can be delayed from offer. Imam Shafi says offer must be connected with acceptance. There should be prompt response. He said that I sold this commodity to you. He says that without no delay, the second party must say, okay, I bought it. So even they consider contract void if acceptance is delayed in same session. He says that if he took time, even if the session is continued, if he took time, if there is delay, considerable delay, then the offer will not be considered valid, offer will be considered terminated. And after 5 minutes, after thinking, after some delay, the second party said that, okay, I bought it. Now Imam Shafi says that his saying I bought is not considered acceptance. Why? Because offer has been terminated. तो अब उसका ये कहना कि मैंने खरीद लिया कुछ देर के बाद, ये सिरे से एक्सेप्टेंस कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस तब कहलाता अगर ऑफर स्टैंड कर रही होती. तो कहते हैं ऑफर तो स्टैंड ही नहीं कर रही, ऑफर टर्मिनेट होगी. अब जब वो कह रहा है कि मैंने खरीद ली, अब वो कहते हैं कि ये उसका ऑफर कहलाएगा. अब जो सेलर है अगर वो बेचना चाहता है और वो कहता है कि ठीक है जी मैंने आपको बेच दिया, तो सेलर का ये कहना एक्सेप्टेंस कहलाएगा, तब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. लेकिन अदरवाइज आप ये समझें कि जी पहली ऑफर सस्टेन कर रही है और मैंने कुछ देर के बाद कह दिया जी मैंने खरीद लिया, ये मेरा एक्सेप्टेंस कहलाएगा, तो इमाम शाफी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. If the second party accept the offer, then contract becomes his liability if following conditions are fulfilled. If second party accept the offer, then the contract becomes offeree and liability if following conditions fulfilled. Which is the following condition? If offeree is still on his offer. If offeree is still on his offer, Malki says he cannot withdraw his offer except delay in acceptance or refusal from the other party. If it is not offeree, it is offerer. So if offerer is still on his offer, तो इमाम मालिक कहते हैं कि अगर उसने सोचने का टाइम दिया था और उसने सोचा और सोचने के बाद ऑफरर ने कहा ठीक है जी मेरी ऑफर अभी बरकरार है, तो इमाम मालिक कहते हैं कि वो ऑफरर जो है अपनी ऑफर से विथड्रॉ नहीं करा सकता सवाए इसके कि अगर दूसरी पार्टी ने टाइम लिया या उसने इनकार कर दिया, तो फिर ऑफरर जो है वो अपनी ऑफर को वापस ले सकता है. अगर वो दूसरी पार्टी उसको रिजेक्ट नहीं करती, डिले नहीं करती और वो कहती है कि ठीक है जी मैंने खरीद लिया, देन ऑफरर कैन नॉट विथड्रॉ हिज ऑफर.
ये इमाम मालिक का पॉइंट ऑफ व्यू है।